Okay, just a minute. Just a minute. Just a minute. Just a Just a minute. minute. Just a minute. Just a minute here. Just a minute here. Okay. Okay. Now Now it is it it is is live on it YouTube. is live on YouTube. We are on We live. are on We are live. all We live are on all YouTube. live on YouTube. Okay. So So yes, now I would like to now I would ask like to Mohit ask Mistry. Mohit Mistry. Can you tell me Can you what we tell have me what discussed we in the have previous discussed in the class? previous class? Yes, sir. Sir, in Hmm. the previous class, our new topic, which is a new place, where we saw that Jatra has settled himself in the new place named Sinduri village, and it was a summer afternoon. Jatra was on his way home after buying Wait, some wait, 1 minute, medicines. 1 minute. He had an old tire on his back. These days, to light stove with he has to light a stove, and his daughter Jimli was rocking her little brother Sidhya to sleep in her lap. After all, there was no other older person with them Hmm. because Jatra's parents were so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. Good. In Sinduri, there were only 8 to 10 families he could call his own, those from his old village. Hmm. The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. Hmm. This was not like the new village Jatra had dreamed about. There was electricity, but only for some time in the day, and there was tap but no water. Hmm. In that village, Jatra got just one room in a tin shed, and Hmm. it had no place to keep those animals he had. He Hmm. also got a small piece of land, but that was not enough for farming. It Hmm. was full of rocks and stones. Still, Jatra and his family worked very hard Hmm. in order to manage their life. But they could not grow much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. In Hmm. Khedi, people did not fall sick often. If someone fell ill, there were many people who knew how to treat them with medicines that were also made from plants. Okay. People felt better after taking those medicines. But here in Sinduri, there was hardly any hospital, and if there is a hospital, it is difficult to find doctors, and there were no medicines. And so we also discussed about three dams. The longest dam in India is Hirakund Dam, Hmm. which is situated in Odisha, Okay. and it is upon the river Nandini, and the largest dam in India Hmm. is Tehri Dam, which is in Uttarakhand, Uttarakhand. with a height of 855 feet. And we have also Can you tell me the discussed river? about the oldest dam in Can you tell me India, the name of the which river? is Kalanai Dam, which is situated in Tamil Nadu, Can you and tell me it is upon the name of the Kaveri river of River. Tehri Dam? सर आपका माइक म्यूट है. Okay, 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 okay. 1 minute. Okay, sorry, my mic was mute. Okay. Yes, Moitri, can you tell me uh, the name of the river of Tehri Dam? Sir, Bhagirathi River. Okay, excellent. Okay, good, very good. Continue. Sir, I have completed. Okay. Now I would like to ask Palak Singh. Palak Singh, tell me, Yes, what did you learn so far from this chapter? No place yes, for us. sir. जाए तो कहाँ जाए? No place for us. जाए तो कहाँ जाए? Yes, sir. Sir, in this chapter, we seen that there is a person named Jatra Bhai who was waiting for his एक सामाड़ी बोलिए जो यात्रा फैमिली है शुरू से एकदम सामाड़ी बोलिए. yes, sir, who was waiting for his son Sidhya with her daughter Jimli. They have came to Mumbai 2 years ago and from Sinduri village, and the Jatra Bhai. स्टार्टिंग में क्या हुआ? यात्री फैमिली में स्टार्टिंग कहाँ में रहते, कौन से गांव में, उससे इसके बाद खेड़ी जो विलेज थे उससे गए सिंदूरी विलेज से उसका जो सफर है, मुंबई का सफर है, पूरा डिटेल्स बताइए. Yes, sir. Sir, first they lived in the Jatra Bhai was born in Khedi village and in the middle of thick green jungles and hills. And his people had been living for many years before his grandfather was born. And the children of Khedi village learned so many things from their elders, like
to dance together, to play flute or dhol, to make pots from clay and bamboo, and to recognize and imitate birds and imitate their sounds. And people collected things from forest for their use. Some of those they would sell in the town above the river. With that money, they would buy salt, oil, rice, and some clothes. वो जो जात्रावे का फैमिली है उनका लाइफ और लाइवलीहुड क्या था? What was their Sir, life and livelihood? How was their life sir, and in, what was sir, their in livelihood? yes, sir, in Khedi village or in Mumbai. Yes, starting Kheri village, Kheri village. Yes, sir. Sir, the people in Jatra's village grows uh, some from collecting and sell them in forest, and from that they buy salt, oil, rice, and some cloths. अच्छा और वहाँ से उसका शिफ्ट कैसे हो गया सिंदूरी विलेज Yes, के? sir. Sir, I am going to tell that. Sir, one day they heard that a big dam was going to build on the river, so that they have to move to another place, because if they stay there, their village would be drawn and all the things will be drawn. And the government official said that in the new village they will get everything of their need. A better house, electricity, buses, and buses, hospitals, schools for their children, trains, etc. And the people of Khedi village were not happy to go, and the Jatra's parents also died before them. Then they moved in the new village, and it was not like the village that the Jatra Bhai was dreaming. There were no electricity. There is electricity, but sometimes for a day, and the electricity also have to pay. There were taps, but no water in the taps. There were hospitals, but there hardly to find any doctors in the hospitals, and also there were no medicines. And there was a school, but the teachers of their school does not care much of their children, and they said that they are newcomers. The Sindhuri village, they had got a small house, and they had to pay for everything, such as medicines, food, vegetables, firewood, and fodder for the animals. And Jatra's wife was also sick. He had bought medicines for her, and he was carrying a old tire on his back. He has to light his stove from these rubber tires, because they caught fire fast, and also save some firewood. But the smoke from the tires were terrible. But they had not much money to buy the kerosene. So how they can buy some firewood from that? And so, in some, the people of the village called the newcomers as unwanted guests, and does not take much care. And so, in Khedi village, people did not fall sick. If anyone gets sick, everyone knew how to treat them from medicines and the plants. And people felt better after taking those medicines. तो गवर्नमेंट ऑफिसर also प्रॉमिस किए थे और जात्राबाई फैमिली को क्या वाकई वो फुलफिल हुआ? No, sir, it hasn't fulfilled, because there was electricity, but sometimes in a day, and the electricity bill also has to be paid. And there were taps, but no water in that. There were hospitals, but hardly to find any doctor in them. And there were also no medicines. There were schools, but the teacher does not care much of their children. Good. And this new village is not like the village that the Jatra Bhai has dreamed. Can I recap? So can you compare of the life of Jatrabhai's family in their village and now in the city? What would be the change to their family? Yes, sir. Yes, sir. Sir, in Jatra's village, there was not electricity. But in this village, there is electricity, but for some times. In Jatra's village, there was no school and no hospital. But in this village, there is hospitals and schools. And and so in Khedi village, But we find that in school there are no teachers. Yes, sir. Yes, sir. Sir, in And in Sindhuri hospitals also we village, find that there is no doctor.
doctors? sir. Yes, sir. We find no doctor Hmm. and no teachers in the schools. Hmm. And so in KD village, all the people live together Hmm. like a big family. But Hmm. in Sinduri village, everyone does not take much care of these, and they also find these people as unwanted guests. Good. Very good. Very good. Okay. So can I recap? Okay. Okay. No. 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 I would like to ask now. Devraj Model, can you tell me what we have learned so far from this chapter? No place for us. From the first, Hmm. What is the theme of this chapter? from the first. Yes. Yes. Sir, in this chapter, we uh, notice that there are some people who are migrated because of some reasons, like because of here we saw that because of the village, they have to be that is why have to be migrate to another village and to another city. This is why they have to face so many problems, and like this, they have to also uh, also have to मतलब उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है वैसे करके जब एक जगह से माइग्रेट करने से उन्हें चीजें खरीदने में प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ढूंढ ढूंढ नहीं पाते Hmm. और जो केजरी विलेज में थे उनका वो प्रॉब्लम नहीं था सब कुछ उनके लिए फैमिलियर था और यहाँ पर उनको कोई हेल्प करने नहीं आता Okay. वो सब लॉन हो गए हैं Hmm. अकेले हो गए हैं Hmm. उनके लिए कोई नहीं है अभी Hmm. उनके ना हो कोई रिलेटिव और अगर है तो बहुत दूर कोई विलेज में इसलिए उनके लिए यह बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है Good. कहीं से कहीं ट्रांसफर हो जाना या कहीं से कहीं चले जाना किसी कारण से या कहीं पर डैम बनाना है या कोई नहीं देवराज मुझे मुझे समझाइए जो यात्रा भाई फैमिली ये पहले खेरी विलेज में था उसके बाद वो सिंदूर विलेज में गए उसके बाद वो मुंबई में चले गए तो ये तो उनका जो सफर है और भी तो बहुत हम लोग देखते हैं बहुत जैसे कि किसी का ट्रांसफर हो गया या तो जॉब के कारण क्या क्या कारण हो सकता है कि लोग अपने घर को छोड़ना पड़ता है मतलब मजबूरन हो गया अगर अगर किसी के जॉब में पोस्टिंग हो जाए उसलिए अगर कोई जो और क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा अगर नया खुद के जगह बिजनेस को चलाने के लिए ओके खुद के बिजनेस को चलाने के लिए और जब वो करते हैं कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो जाता है जिससे उनको बहुत ही प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है ओके और जब कोई पोस्टिंग के लिए करता है तब वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन सब कुछ फिर नए से शुरू हो जाता है उसके बाद से कोई चाहता नहीं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह में जाना है लेकिन अगर किसी कारण से उन्हें जाना ही पड़े तो उनके लिए वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जैसे यहाँ पर यात्रा भाई हमारे चैप्टर में है ओके 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 Can I recap? ओके ऋतुश्री खॉक Yes, sir. हाँ सर ऋतुश्री के बाद मैं रिकैप कर सकता हूँ ओके ओके I'll give you the permission. After Rithurusi, you can recap. Okay. Previously Yes, class yes, we yes. discussed a new place. Hmm. In here we saw in the new place of Jatra Bhai, Okay. new village of You are not Jatra Bhai. visible, Rithushri Khok. You are not visible. I am visible. Yes, yes, not to be. Okay, okay. Carry on. Okay, sir. In Sindhuri village, they had to pay money for every things like medicine, foods, vegetables, firewoods, and for etc. They could not afford to buy kerosene. The roof of Jatra Bhai Jatra's wife had high fever. His daughter Jimli was rocking her little brother Siddhya to sleep in her lap. Mm, in Sindhuri village, there were only
8 or 10 families they could call their own, uh, who's from who's from his old village, and we discuss some question answer from 171 page. तो इतना ही. ओके ओके सुत्रायो. Yes, sir. Sir, in the previous class we have discussed about Jatra Bhai. We have seen about many characteristic in the chapter No Place for Us, like Jatra Bhai, Jimli, Sidhya. We were seeing that traveling, how we means if we leave our home, then how can we how can we manage all the things in new place. We see that we don't can manage new place first, because many things are there to not manage in the new place of because if anybody transfers, तो हमें वहाँ पर मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, हमें वहाँ पर माइग्रेटिंग करने में भी वक्त लगता है. अगर जत्रा की बात करें, जो जत्रा खेदी में बड़ा हुआ था, उसके बाद उसको सिंदूरी में जाना पड़ा, फिर उसके बाद उसको मुंबई में जाना पड़ा. तो खेदी में उसके हर एक फैमिली मेंबर्स को वो अपना हर एक गांव में सिंदूर विलेज है वो सब वहाँ से उसको मुंबई क्यों जाना पड़ा? What was the reason? सर सिंधुरी विलेज में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने जो उन्हें मतलब जो बताए थे कि वहाँ पर पानी होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, सब ही था. पर पानी एक दिन में कुछ समय के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी एक दिन में कुछ समय के लिए, तो उन्हें वहाँ से छोड़ के मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था. जत्रा को वहाँ पर फार्मिंग के लिए भी कोई चीज नहीं मिला. वहाँ पर उसको सिर्फ एक टीन का चाल के नीचे ही एक घर मिला था. वहाँ पर वो सब एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उसको वहाँ पर जाना पड़ा. उसके बच्चों के लिए भी वहाँ पर स्कूल नहीं था. वो जो बच्चे लोगों को स्कूल भेज पाएंगे, उसके लिए भी फंक्शन नहीं था. Okay. So now okay, good. Now I would like to share you something. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई भी जैसे कि जॉब के कारण हो, या तो फ्लड हो, या तो कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, उसको घर जो है उसको छोड़ के जाना पड़ता है. ठीक है, लेकिन ये लोग जो है छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं. जैसे कि कोई डैम बनाना हो, या तो मान लो कि रोड को कंस्ट्रक्शन करना हो, ठीक है, या तो गोल्ड फील्ड हो, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत लोग क्या होता है बेघर हो जाते हैं. सर उन लोग को ये सब लोगों को घर छोड़ना पड़ता है. बिल्कुल शहर में यहाँ पर आप लोग को पिक्चर में दिखाया गया, ये लोग भी कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं. और यहाँ पर देखिए आप लोग का स्लैम एरिया है ये. ठीक, ऐसे कंडीशन में इन लोग को रहना पड़ता है. ठीक है, मतलब इन लोग का रिहेबिलिटेशन ठीक से नहीं हुआ है. और हम लोग आगे देखें तो वैसे ही हम लोग अगर देखें तो यात्रा भाई फैमिली के साथ ऐसा ही हुआ. वहाँ पर डैम बना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए और उन लोग को बहुत सारा प्रॉमिस दिए कि आप लोग को सारा फैसिलिटी मिलेगा, आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाइए. फिर वहाँ पर जमीन मिला सिंदूरी विलेज में, लेकिन हकीकत दूसरा था. जो फैसिलिटी उन लोग को प्रॉमिस किया गया था वो फैसिलिटी नहीं मिला. ओके, सो कैन यू सी द थिंक एंड टेल आंसर क्वेश्चन आंसर? कैन यू सी दैट? Yes, sir. ओके, Yes. तो जैसे कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन आंसर कीप योर ईवीएस कॉपी रेडी. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस इज आल्सो मॉडल आंसर. ओके, जस्ट यू कैन राइट योर आंसर इन योर ओन. ओके, जस्ट ए मॉडल आंसर हियर. द फर्स्ट क्वेश्चन था, Jatra felt alone even in a crowd of people, and have you ever felt like this? Okay, now I would like to ask among you, Anisa Datta,
अनिशा दत्ता के बाद के वो Okay, क्वेश्चन okay, मैं okay, क्या okay, बोलूं? okay, okay, okay. Anisha Datta, can you, Anisha Datta, your mic is mute. Dipandita Sonokar. Yes, sir. हाँ. All the other students can write down their question answer as you can see in the screen. Okay. So first question for you, Dipandita Sonokar, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. हाँ, तो मैं पूछा आपको सवाल कि यात्रा फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल. इस बीरबला शहर में भी अकेला महसूस कर रहा है. ठीक है, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? Yes, sir. I have felt when I go to Bangalore Okay. for my brother's college. So some all things are like strange to me. And when I first traveled to plane, and it was like some I can't wear the seat belt. Though there is a flight attendant, so she helped me to wear the seat belt. ओके, ठीक है. तो इसमें मॉडल से मैंने लिखा आई हैव फेल्ट अलोन व्हेन आई वेंट टू अ न्यू स्कूल. न्यू स्कूल में जाते हैं तो नया क्लास में मिलते हैं, तो कभी कभी अकेला महसूस शुरू में किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं Yes, अकेला sir. महसूस होता है. ठीक है, क्योंकि नया एकदम एटमोस्फियर है, किसी को मुझे कितना पड़ेगा? नहीं है. हाँ, तो यू कैन राइट योर ओन आंसर इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग in your life. Okay, if you ever felt alone, okay, in your life, you Yes, can sir. I write felt just alone. as the model answer. I have I have written down the question answer. Yes, I have felt alone when I went to a new school. Okay, you can write your own answer. So the next question for Sionadas. Can I answer? Next question for Sionadas. Yes, sir. It हाँ. must be very difficult. No, Once first, in your okay. own- Question is, imagine how it feels to leave one's own place. Okay, one's own place and go far away in a new place. ठीक है, कैसा फील होगा Yes, sir. एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने में? Sir, can I answer? Yes. Sir, it must be very difficult to leave one's own place and go far away to live in a new place. Everything will be new in the new place. The people, the mountains, the roads, everything will look like strange in the new place. Check. Okay. It was right. It was there. Okay. हाँ. Okay. Yes. Tell me. Sionadas, tell me. Yes, Tell sir, me. I have told. Okay, you're told. So, as for model answer, I have written down this answer. Okay, to leave one's own place is very difficult task. We say. And when people move to a new place, okay, a lot of problems arise in setting up everything again. बहुत सारा problems को मतलब झेलना पड़ता है. ठीक है. They have to make their new house. उसको या तो नया घर बनाना पड़ता है, या तो live at rent, या तो रेंट लेना पड़ता है. जैसे कि हम लोग के साथ हुआ. ठीक है, मेरा जैसे कि होते हैं वो लोग ज्यादातर गांव से ही आते हैं. हाँ, जैसे कि मेरे बात ही मान लो. ठीक है, तो मेरा घर कहाँ है? मेरा घर है मुर्शिदाबाद में. तो मैं कहाँ पर हूँ? सिवड़ी में. ठीक है, किस मामले में हूँ? जॉब के लिए. और यहाँ पर क्या मेरा घर नहीं है? कहाँ किस लिए हूँ? रेंट पे हूँ. ठीक है, तो इससे पहले भी था बिहार में, तो कहीं ना कहीं रेंट पे रहना पड़ता है. ठीक है, तो ये हो गया फॉर जॉब पर्पस. या तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सर्च न्यू वर्क, अगर कोई काम ढूंढना है उसको फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, कुछ कमाना है. ठीक है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसको नया जगह जाना पड़ता है. ओके, और उस कंडीशन में उसको सर पर आप देखिए कि सिटी के लोग ज्यादातर वर्क के लिए नया जगह जाते हैं, पर गांव के लोगों को हर दिन ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डैम नहीं है, कंक्रीट का रोड नहीं है, सब कुछ उतना मतलब विकसित नहीं है, तो इसीलिए गांव के लोगों को ही ज्यादातर माइग्रेट या फिर हम जो ट्रैवल बोलते हैं वो करना पड़ता है. गुड. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क Rita Batamal, why do you think families like that of Jatras are coming to big cities?
Sir, families like Jatras are coming to cities To to big work for cities, but their livelihood. big cities like Mumbai, huh? Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Yes, sir. huh? For earning for their livelihood. और सर गांव में जो होता है मतलब रोड्स ठीक ठाक नहीं होते वहाँ एडुकेशन का ज़्यादा एडुकेशन वहाँ अच्छा नहीं होता वहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे शहर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर अस्पताल बहुत दूर दूर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके गुड। तो यहाँ पर मैं लिखे फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जात्रास आर कमिंग टू बिग सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड। बेटर लाइवलीहुड के लिए वो कहीं ना कहीं शहर में आते हैं। ओके यस आवर Can I say the tail अनामिका question दत्ता also? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अनामिका दत्ता Yes, have you sir. seen any children in your school or neighborhood who also go to work? सर मुझे क्वेश्चन था मैं फर्स्ट उसको वो को क्वेश्चन बोल सकती हूँ? Yes, have you seen any children in your school or neighborhood who also go to work? Yes, I have seen many children. Many children. Many children in our school and neighborhood who also go to work. Okay. Can I say? Okay. सर वो पूछना था. So as for model answer I have written down. Okay. Yes, I have seen many children. बहुत सारे बच्चे को देखे हैं who live in the slum area जो slum area में रहते हैं, ठीक है? In the outskirts of city मतलब शहर के बाहर में, ठीक है? बहुत शहर के तो में अंदर तो नहीं रहेंगे, शहर के बाहर ही रहेंगे, ठीक है? And go to work for their family. और उन लोग अपने फैमिली के लिए कहीं ना कहीं अपने किसी के घर में काम करते हैं या तो अपना कोई मजदूर का काम करते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी बहुत से बच्चे को देखने को मिलेगा। सर आप जो क्वेश्चन आंसर लेके हैं वो आंसर लेके वो क्या हम अपने से लिख सकते हैं? Yes, you can write down in your own answer, but you can write down this answer, okay? बस मैंने इसका model answer लिखा दिया, okay? Next question for Devmalo Mukherjee. Devmalo Mukherjee, what kind of work do they do, and why do they have to work? No response from Troy Datta. यस सर सर पहले क्वेश्चन का मुताबिक में इसका आंसर करना है तो What kind of work they do? मतलब मान लो वो बच्चे लोग जाते हैं काम के लिए तो क्या क्या काम कर सकते हैं बच्चे, ठीक है? अपने फैमिली के लिए करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? सर बच्चे लोग कई सारे जो स्टेशन में कई सारे बोतल्स एम्प्टी बोतल्स न्यूज़पेपर्स और भी कई सारे चीज होते हैं उसको वो लोग कैरी करते हैं और उससे वो लोग मनी अर्न करते हैं और वह ट्यूशन में जाकर हो सकता है कि किसी का हेल्प कर देता है ताकि वो उस हेल्प के लिए कुछ मनी अर्न कर सके। Okay, good. Okay, yes, now I would like to ask Madhubani Ghosh. Madhubani Ghosh, tell me what kind of work do they do and why do they have to work? Yes, sir. They have to do any kind of work, such as carrying the waste materials and selling them to the junk sellers. Also carrying bags from the ladies who are also called mem sahibs. Also they may work in some factories and also they would work in some families where they would wash the utensils, clean the houses, etc. They have to do this work for their livelihood and for their life because they need some money, but they are unable to have this money because of their economical conditions. Okay, good. Okay, Shadia Sultana. No response. Shayan Ghoshal. Yes, sir. Question for you. In Kheri village,
हम लोग जो चैप्टर पढ़े, ये जो चैप्टर में देखे यात्रा वासी का फैमिली पहले खेड़ी विलेज में रहते थे। इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, जो बच्चे थे वहाँ का वो क्या क्या सीखे खेड़ी विलेज में, क्या क्या सीखे बच्चे? नहीं नहीं वो तो नहीं है, बिल्कुल से नहीं है, मतलब लेंस आई थिंक यू हैव माइक प्रॉब्लम, वी कैन हियर यू प्रॉपर्ली, we can't hear you properly, maybe you have a mic problem. Okay, Monali Mandi, Yes, sir. can you skip the screen? Yes, sir. First question for you, in Kheri village what all did children learn? Children in Khedi village learn dancing, playing flute and dhol, making vessels and other things from bamboo and clay, and recognizing birds and imitating their sounds. Can you imitate any bird sound? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, No, sir. नहीं Okay, थोड़ा सा okay. आँख दर्द दे रहा है, मतलब Okay. मन करे कि सो जाए थोड़ा सा, प्रीतिजा दास, नींद भी आ रहा है मुझे, तो क्या प्रीतिजा क्या दास, कर रहे हैं? तो अच्छा, Yes, sir. हाँ, in Kheri village what all did children learn? The question repeat कीजिए. Same question, in Kheri village what all did children learn? No response. Okay. Aditya Das, खेलते खेलते एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर 4:30 Yes, sir. हाँ, first question for you, in Kheri village what all did children learn? गड़बड़ हो गया ना, तो फाइन Sir, in Khedi village, children learn to dance together, to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sounds. ओके, तो फॉर मॉडल आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पे, इन खेड़ी विलेज चिल्ड्रन लर्न, ओके, यहाँ पर लर्न होगा, चिल्ड्रन लर्न, LEARNT, यहाँ तरफ मिस्टेक है, लर्न होगा, चिल्ड्रन लर्न टू डांस, वो जो यहाँ पर डांस लोग देखे, डांस सीखे, फ्लूट, ठीक है, फ्लूट बजाना सीखे, ढोल, पॉट्स बनाना सीखे, क्ले का, बैम्बू का, और रिकॉग्नाइज बर्ड्स को पहचाने, और इमिटेट देयर साउंड्स, और जो उनका साउंड का नकल भी किए, एंड डू फार्मिंग एंड टू कैच फिश फ्रॉम द रिवर, और रिवर से मछली भी पकड़ना भी सीखे, ठीक है, तो बहुत सारा वो गांव से सीख ली, खेड़ी विलेज से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इमन ठाकुर, what do you learn from your elders? Yes, sir. I learned from my elders to respect elders in a routine, to sleep, how to work in a routine, how to eat, how to write, how to play, and how to help in work, housework. ओके, तो यहाँ पर एक टिकट था, एक मिनट, तो ये वी लर्न होगा, वी लर्न हाउ टू लिव, टी नहीं होगा, ठीक है, वी लर्न हाउ टू लिव, ठीक है, वी लर्न हाउ टू लिव एंड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क फ्रॉम आवर एल्डर्स, ठीक है, कैसे मतलब जिंदगी जीना है और कैसे अलग अलग काम करना है, वो हम लोग बड़े से सीखे, एंड वी आल्सो लर्न मेनी गुड हैबिट्स, ठीक है, जो बहुत सारा हैबिट, गुड हैबिट सभी सीखे, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कायनात सुल्ताना। Yes, sir. जात्रा लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेरी, जात्रा जो है बहुत सारा चीज सीखे खेरी विलेज से, एंड हाउ मेनी ऑफ दोस वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई। हम लोग देखे वो खेरी विलेज, मतलब पहले हम लोग देखे खेरी से आए सिंदूरी विलेज, उसके बाद आए मुंबई, ये जो KSM यानी ये सफर है खेरी, सिंदूरी और मुंबई, तो जो खेरी विलेज में जो सीखी चीज वो मुंबई में कैसे यूजफुल होगा, क्या कमाएगा?
Sir, the skills which Jatra learned in Khedi can be used for him to earn in Mumbai. For explain playing dhol, selling goods in the market, fish catching, etc. Okay. So model answer would like to say Jatra would catch fishes from the sea in Mumbai and may dance or play flute or ढोल बजा music in big or small show. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुंबई में ये उनके लिए एक स्किल है, वो काम कर सकते हैं, ठीक है, जो गांव में सीख के आए हैं. गुड. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क एमडी साइफ मुस्ताक. Yes, sir. Yes. Next question for you. Do you hear the sounds of birds every day? Do you hear the sounds of birds every day? No, sir. Okay. Okay. Sir, but I can try. You can try. Can you imitate some? Can you imitate the sound of any bird? Okay. तो मैंने यहाँ पर as per model answer लिखा है कि yes I can imitate the sound of कोयल bird. Just for model answer. Okay. 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 Next लिखे कि what are some sounds that you hear every day but the people of Kheri may not be hearing? Mohit Misti. What are some of the sounds that you hear every day but the people of Kheri may not be hearing? Sir, the sounds of vehicle, trains, etc. are the sounds that I heard every day, but maybe the people of Khedi may not be hearing. Okay. Correct. Okay. Now I would like to refer Parvin. तो मैंने यहाँ पर एज पर मॉडल आंसर लिखा है पीपल ऑफ खेरी विलेज मे नॉट बी हियरिंग साउंड, जैसे क्राउड हम लोग बोले, क्राउड ने साउंड का जो साउंड है, ट्रैफिक हो या हाई वॉल्यूम म्यूजिक हो इन द पार्टीज, वो कहीं ना कहीं वो खेरी विलेज पे नहीं था. तो रिफर पर आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस एंड व्हेन एंड वेयर? हैव यू एक्सपीरियंस्ड साइलेंस? सन्नाटा का भी एक्सपीरियंस किया है? सन्नाटा साइलेंस? थोड़ा मंडे से टाइम फॉरवर्ड. नो रिस्पांस फ्रॉम यू. Okay. Or any other student whoever experienced silence, you can message. You can message. I will ask you by your name. You can message. I will ask you by your name. Have you experienced silence and when and where? Okay, Anasa Datta, please. Yes, sir. Yes, I feel silence daily at night when I go for sleeping. At this time, there is no sound at all. The people, animals, and birds are all sleeping. There is no vehicles on the roads as well. Thus, there is complete silence. Okay. Now we'll go to next film. तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक फिगर में देखे हैं, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि नो वेयर टू गो, मतलब जाने के लिए कहीं नहीं. तो हम लोग यहाँ पर देखे सम 2 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय डैम प्रोजेक्ट. ठीक है, एक फिगर है, एक मतलब यहाँ पर डेटा यहाँ पर दिया गया है. 2 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू डैम प्रोजेक्ट. डैम प्रोजेक्ट बनने के मतलब उसकी वजह से जो है कि 2 मिलियन मतलब 20 लाख पीपल डिस्प्लेस हो गया है सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक है, आज़ादी के बाद. यहाँ पर अलग अलग कंट्री का फिगर भी दिया गया है. चाइना का है, इंडिया का है, थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, मेक्सिको एंड द फिलीपाइंस. तो इतना ये कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, और प्लान और ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और भी कुछ डिस्प्लेस होने वाले हैं. यहाँ पर चाइना का फिगर देख रहे, ये कुछ डिस्प्लेस होने वाले हैं और ये कंप्लीटेड है, डिस्प्लेस हो गया है. और जब डिस्प्लेस होने के बाद हम लोग देखते हैं बहुत प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उन लोग को अपना घर छोड़ना. माइक म्यूट कर दो.
हाँ, तो ये बहुत प्रोटेस्ट भी करते हैं, आप लोग कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है पोस्टर लेके, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लॉस ऑफ कल्चर विच मीन लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड सो नो टू मेगा डैम। तो ये पोस्टर लेके सब लोग प्रोटेस्ट भी बहुत किए हैं कि वो अपना जो है घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए हैं वहाँ का जो लोग हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हम लोग जैसे कि डैम, जो हम लोग का मेन थीम था टॉपिक का, ये डैम के वजह से जो है वो खेरी विलेज का जो गांव वाले लोग हैं उसका बेघर हो गए, होमलेस हो गए, ठीक है। उनको सिंदूरी विलेज में उसको जमीन दिया गया और वहाँ पर उनका घर बना। लेकिन ये डैम क्या है, व्हाट इज द डैम? ओके, कैन यू एक्सप्लेन? Palak Singh, can you read and explain? Yes, sir. A dam is a barrier that slows the flow of water and results in the creation of reservoir. मतलब डैम एक बैरियर है, जो मतलब एक वॉल बोल सकते हैं, जो कि रिवर की फ्लो को स्टॉप करता है। और इसके रिजल्ट में हम लोग इसके रिजल्ट में ये रिजर्वायर क्रिएट करता है। रिजर्वायर की क्या जरूरत है? व्हाट इज द reasons behind the making reservoir? What sir? रिजर्वायर का क्या जरूरत है? रिजर्वायर का क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ रिजर्वायर? यस सर, रिजर्वायर जो है वो पानी को स्टोर करता है और उसे हम लोग एग्रीकल्चरल और ड्रिंकिंग में और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। Dams are mainly built in order to produce electricity by using water. Dams जो है वो mainly electricity produce करने के लिए बनाए जाते हैं। This form of electricity is known as hydroelectricity. इस electricity की फॉर्म को हम लोग hydroelectricity के नाम से भी जानते हैं। Reservoirs created by dams not only suppress floods but also provide water for activities such as irrigation, human consumption, industrial use, aquaculture and navigability. मतलब ये जो है रिजर्वायर्स, ये सिर्फ डैम ईबीएस को भी नोट डाउन करेंगे। हाँ बोलो। यस सर। सर जो रिजर्वायर्स हैं जो कि डैम्स द्वारा बनाए जाते हैं, वो सब सिर्फ फ्लड को ही नहीं रोकते हैं, बल्कि वो सब पानी प्रोवाइड करते हैं, जो पानी को हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन, ह्यूमन कंजप्शन मतलब हम लोगों के यूज में, और इंडस्ट्रियल यूज मतलब जो फैक्ट्रीज के यूज में आता है, एक्वाकल्चरल मतलब जो पानी के जीवों के लिए यूज होता है, एंड नेविगेबिलिटी। मीन्स What sir? Navigability क्या होगा? What is navigability? Do you know? सर, navigability मतलब होता है और used about a narrow or a river area of a sea. Navigability से क्या फायदा होगा? अद्रिजा राय, आप अद्रिजा राय, can you tell? Yes, sir. Can you tell what is navigability? No, sir, I don't know Anybody exactly. in the class? Anybody in the class? Sir, can I? Yes, yes. Used about a river or narrow area of sea. बोलो 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 बोलो। Used about a river or narrow area of sea. हम लोग उसको बोट यूज नहीं कर सकते। बोट नदी या हाँ, हम लोग उसको बहुत सारे काम में आते हैं। बोट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो गुड्स है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नहीं? ओके, हाँ सर। हाँ ठीक है। नाउ I would like to ask Surjadip Mukherjee. Yes, sir. Now read the next line. Major dams in India. Major dams in India. डाउन करेंगे ईवीएस कॉपी में। हाँ बोलो। Major dams in India. The major dams in India have helped the inhabitants in a number of ways, like
प्रोवाइडिंग, सर क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वाटर, प्रोवाइडिंग एडुकेट वाटर फ्रॉम प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वाटर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन नहीं रे, अब इतना रीडिंग भी तो ठीक से पढ़ना नहीं आता। इरिगेशन पर्पस, हाँ इरिगेशन पर्पस। मैं क्या पढ़ूं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइडेशन। No. You have to explain also. You have to explain also. Okay. Now I would like to ask for this. I would like to ask. Yes, Swami Saha. Explain. Yes, Read sir. and explain. Major dams in India. Yes, read and explain. Major dams in India. The major dams is India. In India, Have helped the inhabitants in a number of ways. हाँ सर, मेजर डैम्स वो हेल्प करता है बहुत सारे उपाय में, मतलब बहुत सारे वेज में। Okay. 1 number, Providing adequate water for providing adequate water for domestic industry and Providing के बाद क्या है? Providing के बाद क्या है? Providing adequate water. adequate water for domestic हाँ. industry and irrigation purpose. अरे इरिगेशन नहीं, इरिगेशन में नहीं बोलने आता। डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड इरिगेशन IRRI इरिगेशन GAGESON सन इरिगेशन का मतलब सिंचाई करना, ठीक है। हाँ ओके कंप्लीट। Palak, okay. Palak Singh, can you explain? Yes, sir. Sir, the major dams in India have helped the inhabitants in a number of ways. Like, मतलब जो इंडिया में मेजर डैम्स है, उन्होंने जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत सारे तरीकों में मदद किया है। मदद करते हैं, बिल्कुल। Yes, sir. First, providing adequate water for domestic इंडस्ट्री एंड एजुकेशन पर्पसेस। मतलब पानी पहुंचाना एडिक्वेट। व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्वेट? सर एडिक्वेट मतलब होता है कि किसी को एडिक्वेट मतलब होता है सर उसको बोलते हैं पर्याप्त मतलब ठीक है, बिल्कुल इनफ, एकदम इनफ, बहुत मतलब जो है जितना चाहिए उतना पानी उसको पानी जो है सफिशिएंट। ओके, वेरी गुड वर्ड, सफिशिएंट। मतलब जो कि ये है डैम्स वो डोमेस्टिक वर्क्स के लिए और इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी पहुंचाता है। प्रोडक्शन एंड रिवर नेविगेशन, मतलब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। यस सर, और रिवर को नेविगेट करते हैं। हाँ, और रिवर नेविगेशन भी काम आता है, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट। Yes, sir. Third point. These major dams in India and their reservoirs provide recreation areas for fishing and boating. जैसे मैंने बोला नेविगेशन है, बोटिंग है ना। ओके। Yes, sir. सर मतलब है कि जो ये मेजर डैम्स है इंडिया में, वो रिजर्वॉयर्स को क्रिएशन एरिया जो कि फिशिंग और बोटिंग के लिए इस्तेमाल आता है वो प्रोवाइड करते हैं। गुड। And fourth point, they have helped in the reduction of floods. मतलब floods नहीं, floods. हाँ। Yes sir. Sir, उन्होंने फ्लड को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद की है। बिल्कुल, फ्लड को कंट्रोल करने में मदद। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट मोहित मिस्त्री, कैन यू एक्सप्लेन डैम्स इन इंडिया? Yes, sir. Dams in India. Highest dam in India is Tahri Dam.